Hello children, how are you? I hope you all are doing well. So children, have you heard about animal instincts? मतलब कभी कभी एनिमल्स को धोखा पहले से ही पता चलता है या कुछ गलत होने वाला है उसकी पहले से ही हिंट आती है. Do you know about it? Let's know about it in more detail through this chapter called The Clever Horse. Okay? The prologue says, this instinct refers to a natural or intuitive quality of acting or thinking. We will read in this story how the smartness and intuition of the horse saved its master. The horse behaved reluctantly while crossing over the bridge as it felt that there was something wrong with the bridge. The story is told by the horse itself. So ये जो story है इसमें हमें ये horse खुद ही बता रहा है अपनी story. Okay? So इट टेल्स कि उसके इंस्टिंक्ट्स की वजह से जो उसको इंट्यूशंस हुए उसकी वजह से कैसे उसने एक ब्रिज क्रॉस करने के लिए हेजिटेशन दिखाई एंड ही वाज एबल टू सेव हिज एंड हिज मास्टर्स लाइफ. ऑलराइट, नाउ लेट्स डू अ वार्म अप. हाउ कैन यू से दैट मोस्ट एनिमल्स हैव इंट्यूटिव पावर? थिंक ऑफ सम एग्जाम्पल्स. तो अगर आपके घर में कोई पेट एनिमल है, से फॉर एग्जाम्पल अ डॉग और अ कैट, यू कैन सी देयर बिहेवियर. अगर कुछ अच्छा है तो दे आर ऑल्सो हैप्पी विथ यू. ओके, इफ एवरीथिंग इज नॉर्मल दे आर ऑल्सो नॉर्मल. अगर कुछ उनको फील होता है कि कुछ गड़बड़ होने वाली है, ओके, देन दे स्टार्ट गेटिंग रेस्टलेस देमसेल्व्स. हैव यू नोटिस्ड इट? You can notice it also. It's pretty easy. Try doing that. Alright? And if you've already noticed something, do talk about it with your friends and your teachers also. Alright. Now let's read this story. One morning in the autumn, my master had to go on a long journey. John harnessed me to the new cart. I liked to pull it as it was very light and the high wheels rolled along so smoothly. It was about to rain. The weather was very windy and dry leaves blew across the road. Master, John and I went along merrily till we came to the toll gate at the entrance to the low wooden bridge. The river banks were fairly high, so the bridge, instead of raising in the arc over the river, went across just level. In the middle, if the river was full, the water would be nearly up to the foot of the bridge. There were good sturdy rails on both sides, so people were not afraid. So, ये जो हॉर्स है वो कहानी बता रहा है कि एक दिन उसके मास्टर को और जॉन को कहीं लॉन्ग जर्नी पे जाना था. तो उन्होंने मुझे एक हार्नेस बांध दिया एंड देन दे केप्ट द न्यू कार्ट रेडी. जो नई कार्ट थी इट वाज वेरी लाइट वेट और उसके व्हील्स जो थे काफ़ी स्मूथ थे एंड दे कुड रोल अलोंग स्मूथली. ओके, बट बारिश होने वाली होती है. ओके, और द वेदर भी जो होता है वो विंडी होता है और ड्राई लीव्स जो होते हैं वो उड़ रहे होते हैं. ओके, उस टाइम पे हवा चल रही थी तेज़. ऑलराइट, तो जैसे ही वो till we came, I went along merrily till we came to the toll gate. जैसे वो टोल गेट पे पहुँचे जो ब्रिज का एंट्रेंस थे. ओके, the river banks were fairly high, so the bridge instead of raising in the arc over the river went across just level. तो जो ब्रिज था उसके वहाँ पे वो देखा रिवर का जो फ्लो था. ओके, अगर वो ज़्यादा तेज़ हो जाता तो the water would have reached until the bridge. ओके, और ब्रिज जो था वो काफ़ी स्टर्डी था बट ओके उसके दोनों साइड पे रेल्स लगे. द मैन एट द टोल गेट सेड दैट द रिवर वॉज राइजिंग फास्ट. जो टोल गेट पे जो सिक्योरिटी खड़ा था, द आदमी खड़ा था, उसने बताया कि पानी तेज़ी से आ रहा है, तेज़ी से बढ़ रहा है बिकॉज ऑफ द विंड एंड द रेन. ओके, ही फियर्ड इट वुड बी अ बैड नाइट. मैनी ऑफ द फील्ड्स वर ऑलरेडी अंडर वाटर. In one low part of the road, the water was halfway up to my knees, but the cart was so good and the master drove gently, so it did not matter. Okay, तो टोल गेट के आदमी ने उनको ऑलरेडी वॉर्न कर दिया था कि पानी जो है, पानी का लेवल जल्दी जल्दी तेज़ी से बढ़ रहा है. ओके, और एक जगह पे जब वो पहुँचे वहाँ पे इस हॉर्स के ऑलरेडी घुटने तक पानी पहुँच गया था. बट फिर भी कार्ट अच्छी थी और मास्टर आराम से इसको चला रहे थे, इसके लिए दे वर लाइक इट डिड नॉट मैटर मच. व्हेन वी गॉट इनटू द टाउन आई हैड अ गुड वेट. मास्टर्स बिजनेस केप्ट हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम, सो वी कुड नॉट स्टार्ट फॉर होम टिल लेट इन द आफ्टरनून. By then the wind was much stronger, and I heard Master say to John that he had never been out in such a bad storm.
We went through a wood where great branches were swaying about like twigs, and the wind made a terrible rushing sound. I wish we were out of this wood, said my master. So कैसे वैसे वो पहुंच जाते हैं टाउन में, ओके और वहाँ पे एज ही इज़ वेटिंग, हिज मास्टर इज़ डूइंग हिज बिजनेस एंड ऑल, उसके बाद जो हवा थी वो और तेज़ हो गई थी. इट वॉज मोर स्ट्रोंगर विंड्स, ओके. और फिर दिस हॉर्स हर्ड टेलिंग जॉन कि मैं कभी भी इतने बुरे स्टॉर्म में कभी भी मैं निकला नहीं हूँ, ओके. आई हैव नेवर पास थ्रू द वुड्स इन सच अ सिचुएशन, ओके. एंड आई विश कि हम लोग ए वुड जो है, द फॉरेस्ट एरिया जो है, जल्दी से जल्दी उसको पार कर दे, ओके. येस सर, रिप्लाइड जॉन. आई होप नो ब्रांचेस फॉल डाउन ऑन अस. द वर्ड्स वर हार्डली आउट ऑफ हिज माउथ व्हेन देयर वाज अ ग्रोन एंड स्प्लिटिंग साउंड, ओके. तो वो जो जॉन भी उनके साथ अग्री करता है और कहता है कि आई होप कि कोई भी पेड़ हमारे ऊपर गिरे ना. और जैसे ही वो ये बोलता है, दे हियर दिस ग्रोन एंड स्प्लिटिंग साउंड. Then an oak tree that had been torn up by the roots came crashing down and fell right across the road in front of us. I will never say I was not frightened for I was. I stopped still trembling. So ऐसे बोलते ही, जब से, क्योंकि वो वापसी के लिए निकले थे, ऐसे बोलते ही उसने देखा तो वो पेड़ गिर गया. अब ये हॉर्स इज सेइंग दैट ही वाज trembling, he was scared, he just stood still over there, okay. Of course I did not turn around or run away. I was not brought up like that. John jumped out and in a moment was standing by my head. He held my bridle and calmed my nerves. That was close. What shall we do now? Asked my master. So but मैं भागा नहीं, I stood there, okay. And then John came and he caught my held my bridle, okay. He calmed me down, he pampered him, he calmed him down, and then the master said कि ये तो बहुत close था. Now what do we do? Well sir, we can't drive over this big tree and we can't get around it. We must go back to 4 crossways. Then it will be about 6 miles before we get to the wooden bridge again. It will make us late, but Black Beauty is fresh. तो कहते हैं कि अब क्या करें. तो जॉन जो होता है कि कहता है, मास्टर वी कांट गो अहेड ओवर दिस ब्रोकन ट्री. हमें वो चौराहे पे वापस जाना पड़ेगा, ओके. और फिर वहाँ से हमें दूसरा रास्ता लेके वो ब्रिज तक पहुँचना है. सो अब वो ये भी कहता है बिकॉज इन द मार्केट दे वेटेड फॉर अ लॉन्ग टाइम. इसकी वजह से जो घोड़ा था, ब्लैक ब्यूटी जो था, उसका आराम हो गया था. ही वॉज फ्रेश एंड ही कुड राइड. दिस हैपेंड समटाइम्स व्हेन द रिवर वॉज फ्लडिंग. सो मास्टर डिड नॉट स्टॉप. अब मास्टर वॉज he was riding the horse cart very fast, okay. He did not stop anywhere. We were going along at a good speed. But the moment my feet touched the ground, the first part of the bridge, I felt sure that something was wrong. I dared not go forward. I made a dead stop. Go on, Beauty, said my master and gave me a touch of the whip. But I dared not move. He gave me a sharp snap of the whip. I jumped, but I dared not go forward. So, वो एक पॉइंट पे पहुंच गया जो ब्रिज के पास पहुंचते ही उसने जैसे ही उस पर स्टेप किया, ही रियलाइज दैट समथिंग इज रॉन्ग एंड ही वेंट बैक. नाउ मास्टर को पता नहीं चला कि क्या हो रहा है एंड ही विप्ड हिम, बट फिर भी ब्लैक ब्यूटी रिफ्यूज टू गो अहेड, ओके. नाउ लेट्स ट्रैक योर परफॉर्मेंस थ्रू द परफॉर्मेंस ट्रैकर. क्विकली आंसर द क्वेश्चंस. ऑलराइट, लेट्स मूव अहेड. There is something wrong, sir, said John. He got down from the cart and came to my head. He took hold of my bridle and tried to lead me forward. Come on, Beauty. What's the matter? Just then, the other man at the toll gate on the other side ran out, flashing a torch like a madman. Okay? तो जॉन ने कहा कि मास्टर हम आगे नहीं जा सकते, कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे. And then John came and he went near the horse, okay, called Black Beauty, and इसने पूछा कि क्या हुआ Black Beauty, what's the matter, why are you not going ahead? तभी उनकी नज़र पड़ती है टोल गेट के दूसरे साइड पे जो एक बंदा खड़ा था. he was flashing the torch, okay. Hoy, 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 stop, he cried. What's the matter? Shouted my master.
The bridge is broken in the middle. Part of it has been carried away by the flood. If you come in any further, you will be in the river. So that's what that person said, that the जो bridge था वो बीच में से टूट गया था. आप अगर इस पे आओगे तो वो और टूट जाएगा और आप सब लोग you will be like in the river. Thank God, said my master. You really are a beauty, said John as he took hold of my bridle and gently turned me round. Of course, I could not tell him what the problem was, but I knew very well that the bridge was not safe. तो कह रहे थे कि मुझे पता था कुछ तो प्रॉब्लम है, बट मैं नहीं बता सकता था कि मतलब I was not able to say that the bridge was not safe. The wind seemed to have settled down. It grew darker and darker, stiller and stiller. I trotted softly along, the wheels hardly making a sound on the soft, wet road. Then the master told John that God had given people brains by which they can find things for themselves. Okay, he said, however, God had given animals a special knowledge which did not depend on thinking things out and was much quicker to respond to danger. These instincts in animals, he said, had often saved the lives of men. So, जैसे ही वो वहाँ पे रुक गए, फिर then they couldn't move ahead. धीरे धीरे wind भी settle होने लगी थी. Okay? और फिर वो अभी आराम से दूसरी जगह से वो लोग जा रहे थे. तभी मास्टर जॉन के साथ बात करते और कहते कि भगवान ने इंसान को सोचने के लिए दिमाग दिया है. But he has given instincts to animal जो बिना सोचते ही they can trace the danger and they will stop there. Okay, they have that thing to respond to the danger. Okay, so John had many stories to tell of dogs and horses and the wonderful ways they had saved the lives of people. So that's what they said, ki there are times when the animals have managed to save a lot of human lives because of their instincts. He thought many people did not take very good care of animals and make friends with them as they should do. At last we got back to the master's house. We saw that all the lights were on. As we came up to the door, mistress ran out to greet the master. Are you safe, my dear? Oh, I have been so worried about you. Did you have an accident? No, my dear, but if Black Beauty had not been wiser than we are, all three of us would have been drowned at the wooden bridge. They went into the house and I heard no more. John took me to the stable. Oh, what a good supper he gave me that night, and then a really thick bed of straw. I was grateful for everything, for I was tired. So, ऐसे ही वो लोग एक दूसरे के साथ बातें कर रहे थे, अलग अलग स्टोरीज बता रहे थे जहाँ पे the animals have had that instinct and as a result of which they were able to save the men. But उन्होंने ये भी बोला कि लोग animals की तरफ काफ़ी cruel होते. They are very harsh, arrogant, rude towards animals. They don't make friends with the animals. अगर आप एनिमल्स के साथ दोस्ती करोगे, फ्रेंडशिप करोगे, they will always be there with you and they will always be faithful with you. Okay? और कैसे वैसे वो लोग पहुँच गए वापस and then the mistress came and then she had prepared a good supper for them and at the same time the master also fed the horse very well. Okay? So this shows how the animal loves his masters when the master loves the animal back. Okay, तो ऐसे ही होता है animals के साथ. If we are good to them, we are kind to them and we love them, they will always be faithful with us और हमें वो कभी भी चोट नहीं पहुंचाएंगे. So love animals and be kind to them. If you have a pet at home, love your pet, be kind, and at the same time when others also have pet, you don't have to be harsh to them. Okay, you have to be good to those pets also. Alright, so children, quickly reread this beautiful chapter, learn the important words, the difficult words, their meanings, and don't forget to do the back exercises.